हाय गाइस, हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है एंड दिस न्यूमेरिकल इज टोटली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. What is the numerical? A 20 kg cannon attached to a cart with frictionless wheels contains a 5 kg cannonball and is initially moving to the right at 10 meter per second. When the cannon is fired, the cannonball moves in the positive x direction while the cannon comes to a halt. What is the velocity of the cannonball? चलो मैं इस क्वेश्चन को आप यहां पर समझाता हूं. ये एक कार्ट है, इसके ऊपर कैनन इंस्टॉल किया गया है और इस कैनन से यहां पर एक बॉल निकलती है. तो ये कार्ट की स्पीड के साथ पहले जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो थोड़ी दूरी के बाद जब ये चला तो यहां से एक बॉल फायर की गई और वो जो बॉल जब फायर की गई उसकी कुछ वेलोसिटी थी, तब ये जो मोशन में था ये रेस्ट में आ गया. जब यहां से एक बॉल फायर की गई तो ये पूरा जो कार्ट है, ये पूरा जो कैनन है, ये रेस्ट में आ गया. ये बोल रहा है कि ये रेस्ट में आ गया. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल व्हेन दिस बॉल हैज बीन शॉट फ्रॉम दिस कैनन. तो वो निकालना है. आपको मैं बता दूं, ये कैनन और ये बॉल और ये कार्ड, इसको मैं पूरे को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकता हूं बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो. व्हाट इज हैपनिंग दैट इज इनसाइड, व्हाट इज हैपनिंग जो इसके अंदर हो रहा है, तो बाहर से कुछ नहीं हो रहा है. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. सो इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड वी नो वेरी वेल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. मतलब कि जो इसका इनिशियल टोटल मोमेंटम होगा दैट विल बी इट इज फाइनल मोमेंटम. सही बात है कि नहीं? चलो यहां पर हम इस न्यूमेरिकल को लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई है. सॉल्यूशन चलो क्या दिया गया है. चलो m इज द मास, mb इज द मास ऑफ द कैनन बॉल एंड द मास ऑफ द कैनन बॉल इज 5 kg. इट इज 5 kg. लेट mc इज द मास ऑफ द कैनन एंड द मास ऑफ द कैनन इज 20 kg. नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ द कार्ट. UB means the initial velocity of the ball. What is the initial velocity of the ball? पहले बॉल इसमें थी तो ये चल रहा था इधर with speed 10 मीटर पर सेकंड. Whatsoever is in it, जो भी इसके अंदर होगा उसकी भी वही स्पीड होगी. तो इसका मतलब है कि initial velocity of the ball is also 10 मीटर पर सेकंड. So what is the initial velocity of the cart or cannon, and UC means the initial velocity of the cannon, and that is again 10 meter per second because this cart is being installed with that cannon. जब cart इधर चला तो cannon भी उसी स्पीड के साथ चला. तो उसके बाद जब यहां से फायर किया गया, let VB be the final velocity of the ball. So VB is the velocity of the ball which is to be calculated. वो हमें नहीं पता. तो जब ये फायर किया गया बॉल यहां से, what happens to the cart? It comes to halt, it comes to rest. तो velocity of the cannon क्या थी? Final velocity that is 0 and VC is equivalent to 0. तो ये डेटा हम यूज करेंगे. वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. Total initial momentum of the system will be equivalent to total final momentum of the system. What is the total initial momentum of the system? That is the initial momentum of the ball plus initial momentum of the cannon. So initial momentum of the ball, that is m, momentum is equal to mass into velocity. Initial momentum of the ball mb ub, initial velocity of the ball, plus mc uc, initial velocity of the cannon, mass of the cannon, that is the initial momentum of the cannon. Initial momentum of the ball, that is the total initial momentum of the system, will be equivalent to mb, but it will be VB. What is VB? Final velocity of the ball, and this is the final momentum of the ball plus final momentum of the cannon, and that will be MC VC. Using the values, how much is MB? Mass of the ball, it is 5. How much is the initial velocity? It is 2. It is initial velocity of the ball, and it is 10 meter per second. And we have taken positive. इसका मतलब यह है कि it is acting the velocities along the positive axis. Plus how much is MC, mass of the cannon, and it is given that it is 20 kg. How much is the initial velocity of the cannon? That is moving with the velocity 10 meter per second. How much is the mass of the ball? It is again 5 kg.
how much is the velocity of the ball, final velocity of the ball, that is to be calculated, वो हम VB ही लिखेंगे, plus how much is the mass of the cannon, it is 20 kg. How much is the final velocity of the cannon, it comes to heart, तो इसकी velocity 0 होगी. So I think it is 5 times 50 and 20 times 200, and it will be 5 times VB. 20 plus 0, or 20 into 0, it is 0. So it comes out to be 50 plus 200, it is 250, is equal to 5 times VB. And we have used the SI system, so no need to worry about the units. It will be 5 VB is equal to 250. VB will come out to be 250 divided by 5. 250 divided by 5. And 5 are 25, and it will be 50 meter per second. But it is positive. This means that it is acting along the positive x-axis. This is the answer of this question. And the final velocity of the ball is 50 meter per second. When the ball is shot with 50 meter per second, then and only then the cart will come to rest. Thanking you.